हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों PSP में आपने गॉड ऑफ वार गेम तो खेला ही होगा। आपको मालूम ही होगा कि गेम गॉड ऑफ वार जो है वो PSP में कितना लैग करता होगा, कितना अटकता होगा, बहुत ही क्रैश करता है, बिल्कुल आपको खेलने में मज़ा ही नहीं आता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कुछ ऐसी सेटिंग्स जो सेटिंग को आप अगर अपने फ़ोन में जो डालते हैं वैसी सेटिंग आप अपने गॉड ऑफ वार गेम में करते हैं PSP में, तो आपका जो गेम है बहुत ही स्मूथ चलेगा, बिल्कुल भी हैंग नहीं होगा। मतलब आप यकीन नहीं करोगे, बहुत ही फास्ट चलेगा। तो उसके लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। और दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए रोज़ाना ऐसी ही गेमिंग की वीडियोस और टेक्निकल वीडियोस लेकर आता रहता हूँ। तो गाइस, अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये गेम प्ले गॉड ऑफ वार का, बिल्कुल इसी तरह चलेगा आपके एंड्रॉयड फ़ोन पे गेम प्ले। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। The seasons come and go like thoughts of you, like a wave returns to the sea into the blue. They change but in a cycle that I can't lose, each painful but delightful to live through. You came into my life just like another season, not for long, just a time, just like another season. Maybe this time next year you'll reappear for no reason, but I'll cherish every day until you come my way this season. The seasons turn and change just like your mind, like the sun gives into the moon, into the night. Time continues marching, it slowly crawls. With each new one starting, I recall you came into my life just like another season, not for long, just a time, just like another season. Maybe this time next year you'll reappear for no reason, but I'll cherish every day until you come my way this season. Each time of year carries memories, like a never fading whisper in the breeze. Oh, we will keep on changing all over again. Yeah,